पॉइंट समझो, हमने ये पीसी ज्वाइन किया तो पीसी क्या करता है, समझो पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स, देयरफॉर पीए इज इक्वल टू पीबी। एबी, एसी और बीसी तो रेडियस है, आप जानते हैं। तो ये जो एंगल है, एंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीपीसी। और उसमें और एक चीज है, ये जो एंगल है बी सेंटर के साथ जो बनाया हुआ एंगल है पीसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीसी। A tangent to a circle is perpendicular to radius through the point of contact. Tangents to a circle number one. A tangent to a circle is perpendicular to radius. ये टेंजेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होती है, ये भी एक पॉइंट है, देखो स्टूडेंट। A tangent to a circle is perpendicular to radius a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. A tangent to a radius is a tangent to a circle is tangent perpendicular होती है रेडियस को, कॉन्वर्स इसका a line drawn through the end point of a radius a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle. A tangent to the circle. थ्योरम नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 देख रहे हैं स्टूडेंट अभी हम। If two tangents are drawn to a circle from an external point, if two tangents are drawn to a circle from an external point, yes, very good Mandar. If two tangents are drawn
to a circle from an external point, then number one, they are equally inclined to the segment. They are equally inclined to the segment joining the center to that point. Joining the center to that point. Number two, they subtend equal angles at the center. They subtend equal angle at the center. Number three, they are equal. अगर टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं हम सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से, तो तीन रिजल्ट्स उसके हम under consideration. They are under consideration. They are equally inclined to the segment joining the center to that point. They subtend equal angles at the center. They are equal. थर्ड थ्योरम देखते हैं स्टूडेंट. Consider a circle. Now, PA PB PT is the tangent. If PAB is second to a circle, if PAB is a second to a circle intersecting the circle at A and B, intersecting the circle at A and B, and PT is tangent and PT is tangent segment PT is tangent segment, then PA into PB equals to PT square. PA into PB equals to PT square. See here student, if PAB is second to a circle, PAB intersect the circle in this line, intersects the circle in 2 points A and B.
and PT is tangent to the circle, then PA into PB equals to PT square. PA into PT is equal to PT square. यही रिजल्ट और दूसरे स्वरूप से भी हम लिख सकते हैं. We can write this also. Next page. Area of rectangle formed by two segments of a chord. Area of rectangle formed by the two segments of a chord is equal to the area of the square is equal to the area of the square of side equal to the length of tangent of side equal to the length of the tangent from the point on the circle. Here student, area of rectangle formed by two segments of a chord is equal to area of square of side equal to the length of tangent from the point on the circle. उसी रिजल्ट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. Now fourth theorem. Here students, fourth result. If two chords inside the circle who is the center of the circle? A, B is one chord, C, D is another chord, and another circle. This chord AB and CD, if produced AB and CD are two chords produced the rectangle formed by two segments of one chord is equal to area to triangle formed by two segments of other chord, that is
here if they two chords intersect internally at point P, then PA into PB equals to PC into PD. This is true in both the cases. Both केस में ये ट्रू है. If the chord intersect internally in the circle or outside the circle when they produced. Now, in this case, PA into PB equals to PC into PD. Now, there is one more result. Here, student, circle. Suppose PQ is tangent to this circle. Segment PQ is tangent to the circle. The tangent is at point A. Now triangle ACB is formed. O is the center of circle. And when you draw here, this triangle ADB is ADB. In this case, angle BAQ, this angle, is equal to angle ACB. Angle BAQ is equal to angle ACB, and angle BAP is equal to angle ADB. The measure of these two angles are equal. And we say that if a chord is drawn through the point of contact of a triangle, यहाँ से एक chord draw की AB, then the angle which this chord make with the given tangent, एक chord AB जो chord है
इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है BAQ, are equal respectively to the angles formed by corresponding alternate segment. ये जो सेगमेंट AB है, सेगमेंट AB है, ये सेगमेंट AB जो अल्टरनेट एंगल जो फॉर्म करती है C के साथ, वो इक्वल होता है, वो एंगल इक्वल होता है. Therefore BAQ equals to ACB and BAP, this angle is equals to, ये जो AC सेगमेंट अल्टरनेट एंगल ADB ड्रॉ करती है, दैट इज BAP इक्वल्स टू ADB. वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट रिजल्ट अबाउट द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स. फंडामेंटल्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम इसमें. पहले ट्रायंगल देखा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखा, अभी हम सर्कल देख रहे हैं और सर्कल में टेंजेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं. कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स नेक्स्ट पॉइंट है. Common tangents of two circles. A common tangent is called direct tangent of both the centers of a circle lie on same side of it and called transverse tangent if center lie on opposite side of it. See here, student. Suppose there are two tangents. Then ये जो दो टेंजेंट है, इन दो टेंजेंट्स को हम कहते हैं कॉमन टेंजेंट. These are direct common tangent. ये जो दो टेंजेंट है, यह है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. और we can draw also these two tangents. हम ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. एक टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट को हम कहते हैं कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. These are two transverse common tangent.
अगर कॉमन टेंजेंट दो सर्कल को होते हैं तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरा होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और इसका एक महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दो सेंटर्स है